અને કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who Sees himself as one with thee. know he is also one with every other. know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. और दीपा जी, आपका स्वागत है. सभी जानते हैं कि दीपा जी हमारी इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं थियोसॉफी सोसाइटी की, और इनके बारे में अगर मैं कहने बैठूंगा तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन जो खास खास बातें हैं वो तो हमें शेयर करना ही चाहिए. बहुत काम करती हैं दीपा जी रात दिन, और पूरी तरह से सेवा में डूबी रहती हैं. और सर्विस क्या है ये उन्हीं के लेख में आपको आज नजर आएगा. दीपा पादी जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फिलोसॉफी में, और इस वक्त वो भुवनेश्वर उड़ीसा में रहती हैं. यूजीसी की पोस्ट पर रही हैं, डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर रही हैं. लिव एंड लेट लिव एक एनालिटिकल स्टडी उन्होंने की थी होलिस्टिक एथिक्स के ऊपर. शी रिसीव्ड डिलीट डिग्री इन 2007 फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी ओडिशा. द एथिकल फिलोसॉफी ऑफ भगवद गीता, उन्होंने ये किताब भी हाल ही में लिखी है. और उन्होंने अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही एक बुक एडिट की है जिसमें जो वुमेन इश्यूज पर थी कि यस शी कैन, हाँ वो कर सकती है अगर हिंदी अनुवाद हो. शी राइज आर्टिकल ऑन सोशल, फिजियोलॉजिकल, थियोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज. बहुत सारी मैगजीन्स और जर्नल में लिखती हैं. दीपा जी सेकंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं. उनके पिताश्री स्वर्गीय आरसी रथ वॉज अ डेडिकेटेड थियोसॉफिस्ट, और उन्होंने उत्कल थियोसॉफिकल फेडरेशन की नींव भी रखी थी भुवनेश्वर में उड़ीसा में, और प्रेसिडेंट की तरफ बहुत सालों तक कार्यरत रहे. दीपा पादी जी टीओएस प्रेसिडेंट की तरह 2016 में नामांकित हुई, और वो एक्टिवली एंगेज है बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट में. सिर्फ थियोसॉफी नहीं, बाहर भी वे बहुत कार्य करती हैं. वो वाइस प्रेसिडेंट है गवर्निंग बॉडी ऑफ टीओएस रायगढ़ स्कूल, और 2016 में उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी बहुत सारी ऑर्गेनाइज की. वे फाउंडर मेंबर हैं दृष्टिदान की. ये एक आई बैंकिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, नेत्रदान और नेत्र ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ एक ये ऑर्गेनाइजेशन है. और वे रेड क्रॉस सोसाइटी ओडिशा ब्रांच से भी जुड़ी हुई है. जुड़ी ही नहीं, वे उसकी लाइफ मेंबर है. और ओडिशा काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर से भी वो जुड़ी हुई है. वो एडवाइजरी कमिटी ऑफ मिशन आसरा, मतलब कि जो मेंटली इल और ऐसी महिलाएं रहती हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनके लिए आसरा भी वे बनती हैं. तो बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी कार्य. हमें आज आमंत्रित हैं आप, मंच आपका है, हमें विषय से अवगत कराइए. धन्यवाद. वॉल्यूम नहीं आ रहा है शायद. हेलो, Am I supposed to start now? yes ma'am, please. Namaste. Good evening. My warm greetings to the members of TRIVENI meet of 3 lodges, REWA, Rohit and Jyoti of Mumbai. I must thank Brother TARAL for giving me this opportunity to share some of my ideas with thoughts and ideas with you all. I would also like to thank
VARSHA ji and Archana ji for translating and speaking in Gujarati and Hindi language so that others can also understand. My talk today is on the topic Blavatsky's teachings and Bhagwad Gita. I would like to start with a quotation of Madame Blavatsky, which goes like this. I quote, "We shall begin this work expounding, so far as permitted, the esoteric meaning of the text of Bhagavad Gita. Some of our readers, are especially Hindus, will be doubtless and astonished to discover the almost perfect identity between the concealed sense of this immortal epic and the Arhat Tibetan doctrine, which has been in part expounded in the fragments and other writings," unquote. This explains the close affinity between Theosophy and Bhagavad Gita. One finds many concepts and laws concealed in the Bhagavad Gita in the forms of symbols, which Madame Blavatsky brought out and explained in a way understandable to the Western world. Theosophy is the teaching of Madame Blavatsky. It is Hinduism at its best, says Mahatma Gandhi. It is said that through Theosophy, Gandhi was attracted to Bhagavad Gita and initially started reading with two English theosophists in London. It is true that most of the spiritual doctrine described in theosophical literature are found in Hindu scriptures and philosophies such as Bhagavad Gita and Upanishads, Vedas, but Theosophy is not confined to these only. It is not exclusive possession of any religion. Theosophy is not a religion in the sense we use the word, such as Hinduism, Islam, Buddhism, Christianity, etc. Religion is not the truth. Every religion is only partially true. Madame Blavatsky speaks of universal brotherhood, including sisterhood of humanity, as the first objective of theosophical society, while other religions speak of brotherhood of Buddhism, brotherhood of Hinduism, brotherhood of Muslims, and so on, which is divisive and partially true. Therefore, religion is not the truth, but truth may be attained through religions. Truth is above all religions. In fact, truth is the essence of all religions. Therefore, the motto of Theosophy is Satyat Nasti Paro Dharma, which means in English, there is no religion higher than truth. What is this truth then? Truth is pure, absolute consciousness, which is one and all pervasive. It is behind all manifestations of world, though it is named differently as Brahman, Buddha, God, and many more names. The same idea is expressed in the Bhagavad Gita when Krishna explains to Arjuna, Sarva Dharman Paritejya Mamekam Sharanam Braja, which means rise above all religions as they are divisive. Only focus on me as I am the ultimate. Now here the word Mamekam, which means only me, means the truth. Here, me doesn't mean Krishna, but here it means the truth, the Param Brahma.
one and the only one, the pure absolute consciousness. Krishna here represents the eternal, invisible, and one reality which is all-inclusive. That is why Gita is considered as a universal treatise. Anyone from any religion can read it and is free to interpret according to one's belief and spiritual development. Through this absolute consciousness, as mentioned in Gita, all beings, all things are connected. Similar tone is found in Gita in the 7th verse of this 7th chapter. It says, "There is nothing whatsoever higher than me, O Dhananjaya. All this is strung in me as clusters of gems in a string." So says Krishna, everything is essentially nothing but me. Well, it reminds me of an anecdote which I would like to share in a lighter vein. One middle-aged man purchased gold jewelries like necklaces, bracelets, waistbands, earrings, nose rings, etc. For his daughter's marriage. He kept all the things in a box and locked them. In the morning, he gave the key to his 8-year-old son and asked him to get the gold from the box. The boy took the key, opened the box, looked thoroughly, and went back. He told his father, "I searched the box, but did not find gold. Please come and see it yourself." The father went and showed him the jewelries in the box, saying that the gold is in different forms of these jewelries. Gold is in every atom of the constituents. In fact, these jewelries are nothing but gold. Similarly, consciousness manifests everywhere. Every manifested thing is an expression of it in some form or other. It is the one absolute consciousness in itself, of which our own consciousness is an individualized unit. Bhagavad Gita and Madame Blavatsky are both of this opinion. In the philosophy of both, we find the cosmocentric unity strongly held as the basic truth. In the 10th chapter of Bhagavad Gita, the world is conceived as a living organism, a vast interconnectedness, a cosmic harmony, inspired and sustained by the one supreme entity. Although its presence is felt in everything and being, it is more manifested in some than in others. So Krishna identifies himself as Meru among the mountain peaks. Among the immovable things, he is Himalaya. Of all trees, Ashwastha. Of all Agni, Basu. Of all weapons, the thunderbolt. Of beasts, the lion. Of birds, Garuda. Of all rivers, the Ganges. Of the stars, moon. Of the lights, sun, and so on. The aim is to develop an absolutely infallible understanding of the unity of all existence, the unity of man and nature, or the whole cosmos, and to realize that both belong to this unity. Similar voice is heard when HPB says, occultism does not accept anything inorganic in the cosmos. The expression employed by
science, inorganic substance means simply that the latent life slumbering in the molecules of so-called in-next matter is cognizable. All is life, and every atom of even mineral dust is alive, though beyond our comprehension and perception. Unquote. Madame Blavatsky says, challenging the materialistic science, that because we cannot perceive any science by which we can recognize the consciousness, say in stones, we have no right to say that there is no consciousness. These rocks, stones, chemical items are simply organic units in profound lethargy. Madame Blavatsky has dealt with law of karma and reincarnation as mentioned in Bhagwad Gita in more convincing and logical way. She is the one who introduced the law of karma to the Western world. Theosophy explains all problems of life by means of law of karma, which has a great appeal to the modern intellect. Karma is considered to be the sole causal factor responsible for inequality of the situations in which we are born and brought up. Theosophy has given a very practical understanding of this law. In the words of Madame Blavatsky, the law of karma is the ultimate law of the universe. Every human being is bound by this law. Justice is maintained in the universe through this law. To try to escape karma is to create even worse karma, as it happens in suicidal cases. While discussing the law of karma in Bhagavad Gita, it is essential to know the three types of karma concerning this law. Number one, sanchita karma, the total accumulated karma, which has not started operating. Number two, prarabdha karma, which are already in operation, such as birth, the happenings of life, depending upon the good and bad contents of the product of prarabdha karma. Therefore, prarabdha karma can be treated as inevitable operative karmic force associated and attached with an individual throughout his life from birth to death. Number three, kriyamana karma. These are fresh accumulated karmas of the present life, which will start bearing fruit in the next life. Even if it is accepted that one has no control over prarabdha karma, such as one's birth in a particular family or environment, one has sufficient control over kriyamana karma in present life. If one chooses the right mode of action and understands true nature of oneself by removing the selfish desire and conduct it, can stop the accumulation of fresh karma, that is kriyamana karma, and can put an end to the operation of the accumulated karmas or sanchita karmas. We can dynamically mold our future instead of passively accepting past. The choice is given to us to make the present life an opportunity or an obstacle for attaining the highest goal. The choice is ours. Theosophy is also of the same opinion
we create our own destiny. Madame Blavatsky brought back the concept of reincarnation after 1.5 centuries with the touch of Eastern teachings and right understanding. The question arises whether it is possible to know this absolute reality or truth, which is the birthright of every human being. The answer is yes. Though the truth is one, the parts are many to realize it. The paths are many to realize it. There are mainly 4 paths as mentioned in Bhagwad Gita: Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, and Karma Yoga. To each temperament, there is one road which seems to be the most desirable, but the goal cannot be reached by any one of these 4. All paths are necessary to make up the ladder. One may be more intense towards knowledge, but at the same time, he can be devoted to his master. I would like to give an example of a unique master and devoted disciple. You know about Swami Ramakrishna Paramahansa and his disciple Vivekananda, who introduced Hinduism in the West. Swami Ramakrishna was a great devotee of the deity Mother Kali. He used to talk to Goddess Kali quite frequently. He was not educated and never studied any scripture, but has tremendous faith in his Goddess Kali. He could give discourses for hours together, which indicated his profound understanding of oneness of all creations. On the other hand, Swami Vivekananda was a great intellectual representing the path of knowledge. Yet, he was a great devotee of his master, Swami Ramakrishna. So, Swami Vivekananda had made a statement, and I quote, "My master was a bhakta without and jnani within. I am jnani without and devotee within." Thank you, Deepa ji. Your first part, you are stopping here. Varsha ji, please आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए. Varsha ji, I think she was right there here. हाँ सर, हाँ, इंटरनेट નો બહુ इंटरनेट प्रॉब्लम. ओके, वेलकम वर्षा जी. आप સંભળાયો અવાજ? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है आपका. मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ. हेलो हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ सर, અવાજ સંભળાય છે? नहीं आ रहा है आपका, आवाज भी आ रहा है, दिख भी रही है आप. ओके, मोबाइल માંથી હવે કરી લો. ओके, वर्षा जी, आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. अहमदाबाद गुजरात से हैं. MA, BEd, PhD एग्रीकल्चर में आपने किया है, क्रेडिट एंड डेवलपमेंट में. असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी आप गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात में. इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं. थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2005 और 2006 से जुड़ी हैं. रोहित लॉज गुजरात से संबंधित हैं. गुजरात फेडरेशन में भी एक्टिव हैं. करंटली वे रोहित लॉज अहमदाबाद की प्रेसिडेंट हैं. यंग यूथ चेयरमैन है गुजरात फेडरेशन की. फॉर्मर कोऑप्टेड काउंसिल मेंबर है इंडियन सेक्शन की. नेशनल लेक्चरर भी हैं थियोसॉफिकल इंडियन सेक्शन की. और मॉडरेटर हैं यंग यूथ प्रोग्राम गुजरात में. और भोपाली, भुवनेश्वर, उड़ीसा, हैदराबाद वगैरह अलग अलग जगह उन्होंने बहुत एक्टिविटी की है. बहुत सक्रिय रूप से त्रिवेणी के साथ भी जुड़ी हैं और बहुत एक्टिव हैं. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप गुजराती में प्रथम भाग 9 मिनट में संक्षिप्त में कहिए. धन्यवाद.
ठीक है। ब्रदर तभी मुंशी जी, दीपा मैडम और सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। माफ कीजिएगा, बीच बीच में मेरा वीडियो या वॉइस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि आज वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज का जो विषय है मैडम ब्लेवेट्स्की और श्रीमद् भगवद गीता। जब मैं इसका ट्रांसलेशन कर रही थी तो बड़ी मुश्किल समझ में आपका आई। आवाज इको हो रहा है, शायद 2 स्पीकर चालू है वहाँ। लैपटॉप जी सॉरी। हेलो, नाउ इट इज ओके। हाँ नहीं, इको हो रहा है, वो आवाज आ रही है। आप ये हेडफोन निकाल के बोलिए तो शायद नहीं आई। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं अब नहीं आई, बट परफेक्ट है। थैंक यू, प्लीज गो ऑन। तो मिश्री ये समझ में आए कि थियोसॉफी में जो बात बताई है वही श्रीमद् भगवद गीता में है और श्रीमद् भगवद गीता में जो है वही थियोसॉफी में है। तो आविए જોઈએ ગુજરાતી અનુવાદ વિશે શું કહે છે। તો આજનો વિષય છે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા। મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને ભગવદ ગીતાનો ઉપદેશોમાં જોવા મળતી કેટલીક કેટલીક સામાન્ય સામાન્ય વિભાવનાઓ પર વિભાવનાઓ મારી પર વાત મારી આપવાનું મેં આપવાનું મેં વિચાર્યું। વિચાર્યું। હું મારો મારો વિષય વિષય વર્ષાજી, મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના હમણાં પણ તમારો અવાજ ગુંજી રહ્યો છે, કેમ એવું થાય છે આજે? તમે સ્પીકર કઈ લગાડ્યું છે? I think હું હું લેપટોપ જ બંધ કરી દઉં। અચ્છા, હા લેપટોપ હવે? ચાલુ છે। હા હવે નહીં આવે કદાચ સર। હા હવે નથી આવતું। સોરી। હું મારો વિષય મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના ઉપદેશો અને શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતાથી શરૂ કરવા માંગુ છું। હવે હું મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના અવતરણની સાથે મારી વાત રજૂ કરું છું। સાથે ભગવદ ગીતાના લખાણના વિશિષ્ટ અર્થને નહીં, નથી આવતો। આઈ થિંક યુ વિલ હેવ ટુ શટ ડાઉન યોર વિડિયો। કાર્યની શરૂઆત અમારા કેટલાય વાચકોના અને હા સર, એટલે મેં હમણાં બંધ કર્યો વિડિયો। ઓકે। અલહર્ટ તિબેટિયન અવાજ આવે છે સર? हेलो। हाँ, हेलो। अगर आप खाली ऑडियो भी यूज करेंगे भी चलेगा। ऑडियो यूज करिए आप खाली और बोलिए। हाँ सर, ओके। અલહર્ટ તિબેટિયન સિદ્ધાંત વચ્ચે લગભગ સંપૂર્ણ ઓળખ શોધીને નિશંક અને આશ્ચર્યચકિત થશે, જેના કેટલાક સારાંશ સાથેના નાના ભાગો અન્ય લખાણોમાં પણ આપવામાં અને સમજાવવામાં આવ્યા છે। આ થિયોસોફી અને ભગવદ ગીતા વચ્ચેના ગાઢ સંબંધને સમજાવે છે। ગીતામાં પ્રતીકોના રૂપમાં અનેક વિભાવનાઓ અને ખોટ જોવા મળે છે, જે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ તે ખોટ પૂર્ણ કરી અને તેના ઘણા ઊંડા અર્થો બહાર લાવ્યા, સાથે પશ્ચિમી વિશ્વ સમજી શકે તે રીતે તેને સમજાવ્યા। થિયોસોફી એ મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીનું શિક્ષણ છે। તેમાંય તેમને જણાવ્યું કે હિન્દુ ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે। શ્રેષ્ઠ મહાત્મા ગાંધી વિશે એવું કહેવાય છે કે થિયોસોફી દ્વારા ગાંધીજી ભગવદ ગીતા તરફ આકર્ષાયા હતા અને શરૂઆતમાં લંડનમાં અંગ્રેજી થિયોસોફિસ્ટ મિત્રો સાથે તેઓએ વાંચવાનું શરૂ કર્યું હતું। હા, એ સાચું છે કે થિયોસોફિકલ સાહિત્યમાં વર્ણવેલા મોટાભાગના આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતો અને તેની ફિલોસોફી ઘણા હિન્દુ ગ્રંથો જેવા કે ભગવદ ગીતા અને ઉપનિષદોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ થિયોસોફી ફક્ત આટલા જ ગહન ઊંડા જ્ઞાન સુધી મર્યાદિત નથી, તેનાથી કંઈક વિશેષ છે। કોઈ ધર્મનો વિશિષ્ટ કબજો છે। થિયોસોફી એ કોઈ ધર્મ નથી જે અર્થમાં આપણે હિન્દુ ધર્મ, ઇસ્લામ ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ અહીં ધર્મ પોતે સત્ય નથી। દરેક ધર્મ માત્ર આંશિક રીતે જ સત્ય છે। મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી થિયોસોફિકલ સોસાયટીના પ્રથમ ઉદ્દેશ તરીકે માનવતાના બહેનપણા સહિત, એટલે કે અહીંયા સિસ્ટરહુડની પણ તેઓએ વાત કરી છે, તો માનવતાના બહેનપણા સહિત વૈશ્વિક ભાઈચારાની પણ વાત કરે છે, જ્યારે અન્ય ધર્મો બૌદ્ધ ધર્મના ભાઈચારાની વાત કરે છે, સાથે હિન્દુ ધર્મ હિન્દુ ભાઈચારાની અને મુસ્લિમોના ભાઈચારાની વાત કરે છે, પરંતુ ખરેખર એ વિભાજનકારી અને આંશિક સત્ય છે। આથી ધર્મ એ સત્ય નથી, પરંતુ કદાચ ધર્મો દ્વારા તે હાજર રહે છે। સત્ય બધા ધર્મોથી ઉપર છે,
હકીકતમાં સત્ય એ સમગ્ર ધર્મોનો સાર છે. આથી થિયોસોફીનું સૂત્ર છે સત્ય નાસ્તિ પરો ધર્મ, એટલે કે સત્યથી કોઈ ઊંચો ધર્મ નથી. તો પછી સત્ય શું છે? સત્ય એ સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચેતના છે. શું તે એક સાર્વત્રિક શુદ્ધ ચેતના છે? શું તે વિશ્વની કોઈ પણ અભિવ્યક્તિ પાછળ પોતે સ્વયં છે, સાથે છે? તે બ્રાહ્મણ, બુદ્ધ ભગવાન અને અન્ય નામો તરીકે પણ નથી, તેનાથી પણ તે અલગ છે. આવો જ વિચાર ભગવદ ગીતામાં પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે, જેનો અર્થ એવો થાય કે બધા ધર્મોથી ઉપર ઉઠો, કારણ કે તેઓ વિભાજનકારી છે. એટલે કે અહીંયા ધર્મને વિભાજનકારી છે એવું જણાવ્યું છે. આથી ફક્ત હે અર્જુન, તું મારા પર જ તારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર. તો અહીં જે કૃષ્ણએ મામ કેમની જે વાત કરી છે, તો એ એમને સત્યની જ વાત કરી છે. મારા દ્વારા એનો અર્થ છે સત્ય. પરબ્રહ્મ શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ ચેતના છે. કૃષ્ણ અહીં શાશ્વત, અદ્રશ્ય અને એક વાસ્તવિકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે સર્વવ્યાપી છે. આ નિરપેક્ષ ચેતના દ્વારા તમામ જીવો અને બધી વસ્તુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ગીતાના 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માંડમાં તેમના આધિપત્ય અને તેમના સર્વોચ્ચ સ્થાન વિશે જણાવે છે, જેના પર આ સમગ્ર સર્જન અસ્તિત્વ ધરાવે છે. નિર્માતા, નિર્વાહક અને સંહારક છે, દોરામાં બાંધેલા મણકાની જેમ. બીજામાં શબ્દોમાં કહીએ તો કૃષ્ણ એવું કહે છે કે દરેક વસ્તુમાં હું જ છું, અને અહીં હળવી રીતે કૂદકાની જે યાદ અપાવે છે. કેવી? તો કે છે કે એક આધેડ વર્ગના માણસે તેની પુત્રીના લગ્ન માટે સોનાના અલગ અલગ દાગીના બનાવ્યા, અને આ દાગીનાને એક બોક્સમાં મૂકીને તેમને લોક કરી દીધા. અને સવારે તેમના 8 વર્ષના પુત્રને ચાવી આપીને બોક્સમાંથી તે સોનું લાવવા માટે કહ્યું. તેને ચાવી લીધી અને બોક્સ ખોલીને તે દીકરાએ જોયું, અને પાછો તે પોતાના પિતાની પાસે ગયો અને કહ્યું કે બોક્સમાં તો સોનાના દાગીના નથી, આથી કૃપા કરીને તમે જાતે જઈને જુઓ. પિતાએ જઈને તેને બોક્સમાંના બધા જ સોનાના દાગીના બતાવ્યા અને કહ્યું કે અહીં સોનાના દાગીના છે, એટલે કે સોનું છે, પરંતુ એ અલગ સ્વરૂપમાં છે. અત્યારે સોનું એ દાગીનાના સ્વરૂપમાં છે. આ રીતે દરેક ઘટકોના અણુમાં સોનું હોય છે. વાસ્તવમાં આ જ્વેલરી સોના સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. તેવી જ રીતે ચેતના સર્વત્ર પ્રગટ થાય છે. દરેક પ્રગટ થયેલી વસ્તુ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે ચેતનાની અભિવ્યક્તિ છે. એ પોતે એક સંપૂર્ણ ચેતના છે, જેમાંથી આપણી પોતાની ચેતના તેનો એક વ્યક્તિગત ભાગ છે. ભગવદ ગીતા અને મેડમ લેવેટ ચેતના વિશે આવું જ મંતવ્ય છે. બંનેની ફિલોસોફીમાં આપણે કોસ્મોસેન્ટ્રિક યુનિટની મૂળભૂત સત્ય તરીકેની મજબૂત રીતે ભગવદ ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં વિશ્વની કલ્પના એક જીવંત જીવ તરીકે કરવામાં આવી છે. એક વિશાળ પરસ્પર જોડાણ જે સર્વોચ્ચ અસ્તિત્વમાં ફેલાયેલા અને તેની ટકાવી રાખવા માટે સંપૂર્ણ વૈશ્વિક સંવાદિતા, દરેક વસ્તુ તેની હાજરીના અનુભવની વાત કરી છે. અહીં કૃષ્ણને શિખરો વચ્ચેના પોતાને નિરુ તરીકે ઓળખાવ્યા. અચલ વસ્તુ, તમામ પશુઓની ગર્જનામાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ, નદીઓમાં રહસ્યમયી ગંગા, વાસુદેવ, તારાઓ, પ્રકાશ, સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતે જ છે એવું જણાવ્યું. તો આ પરથી આપણે સમજાય છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિ અથવા તો કોસ્મોસની એકતા તો અંતે એક જ છે. અહીં આપણને HPP કહે છે કે ગુપ્તવાદ કોસ્મોસમાં અજ્ઞાનતાવશ કંઈ પણ સ્વીકારાતો નથી. વિજ્ઞાન અકાર્બનિક પદાર્થ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી અભિવ્યક્તિનો સીધો અર્થ એવો કરી શકે કે મુક્ત જીવન કહેવાતા અણુઓમાં સૂઈ ગયું છે, પરંતુ તે આગલી જ પેટર્નમાં એ સૂઈ ગયેલું ચૈતન્ય જ્ઞાની બને છે. આમ આખું જીવન જો એ આપણી સમજ અને ધારણાની બહાર છે. ભગવદ ગીતામાં આગળ જણાવ્યું છે કર્મ અને પુનર્જન્મની વાત કરી છે. તો મેડમ લેવેટ્સ્કીએ પણ પશ્ચિમી વિશ્વ સમક્ષ આ કર્મનો કાયદો અને પુનર્જન્મનો જે કાયદો છે એને અલગ રીતે રજૂ કર્યો. થિયોસોફી જીવનની તમામ સમસ્યાઓને કર્મના કાયદા દ્વારા સમજાવે છે, જે આધુનિક બુદ્ધિને ખૂબ જ આકર્ષિત કરે છે. વિગતોનું કાર્ય ખૂબ પડકારજનક છે, છતાં પણ પરિસ્થિતિમાં જન્મ્યા, ઉછર્યા અને એની અસમાનતા માટે કર્મને એકમાત્ર કારણભૂત પરિબળ માનવામાં આવે છે. અને આપણું આ જે સુખ અને દુઃખ છે આપણા જૂના કર્મનું પરિણામ છે. આવી જ રીતે ભગવદ ગીતામાં પણ કર્મના નિયમની જો ચર્ચા કરીએ તો આ કાયદાને લગતા 3 પ્રકારના કર્મને જાણવું જરૂરી છે. નંબર 1 છે સંચિત કર્મ. સંચિત કર્મ એ કુલ સંચિત કર્મ જે કામ કરવાનું હજી આપણે શરૂ કર્યું નથી તે. નંબર 2 ઉપર છે પ્રારબ્ધ કર્મ, જે પહેલાથી ઓલરેડી કાર્યરત જ છે. કર્મ ફળો ઉપર આધાર રાખીને જીવનને સારી અને ખરાબ ઘટનાઓ જન્મ લે છે.
આથી પ્રારબ્ધ કર્મને જીવનભર વ્યક્તિ સાથે સંકળાયેલી અનિવાર્ય ઓપરેટિવ કાર્મિક બળ તરીકે ગણી શકાય એવી અસર હેઠળ વ્યક્તિ હોય છે, છેક જન્મથી મૃત્યુ સુધી. નંબર 3 પર છે ક્રિયામાન કર્મ. ક્રિયામાન કર્મ એટલે વર્તમાન જીવનના તાજા સંચિત કર્મો જે આગામી જન્મમાં ફળ આપવાનું શરૂ કરશે. જો તે સ્વીકારવામાં આવે છે કે કોઈ ચોક્કસ કુટુંબ અથવા વાતાવરણમાં જન્મ લેવો એ કોઈના હાથમાં નથી, કારણ કે પ્રારબ્ધ કર્મ ઉપર કોઈનું નિયંત્રણ નથી. વર્તમાન જીવનમાં સંચિત અને ક્રિયામાન કર્મ પર વ્યક્તિનું પૂરતું નિયંત્રણ છે. જો વ્યક્તિ યોગ્ય કાર્ય પદ્ધતિ પસંદ કરે અને સ્વાર્થી ઈચ્છા અને આચરણને દૂર કરી પોતાના સાચા દૈવી સ્વભાવને સમજે તો તે તાજા કર્મના સંચયને રોકી શકે છે અને જે ક્રિયામાન કર્મ છે અને સંચિત કર્મો અથવા સંચિત કર્મોની ક્રિયાનો અંતે અંત લાવી શકે છે. ભૂતકાળને નિષ્ક્રિય રીતે સ્વીકારવાને બદલે આપણે આપણા ભવિષ્યને ગતિશીલ રીતે કરી શકીએ છીએ. અને અંતે છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં જણાવ્યું છે કે પસંદગી આપણને વર્તમાન જીવનમાં સારા કાર્યો કરવાની તક અથવા સર્વોચ્ચ ધ્યેયમાં હાજરી આપવા માટે અવરોધ બનવા માટે આપવામાં આવે છે. પસંદગી દરેક વ્યક્તિની પોતાની છે. થિયોસોફી પણ સમાન અભિપ્રાય ધરાવે છે. આપણે આપણું ભાગ્ય જાતે બનાવીએ છીએ. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ 1.5 સદી પછી પૂર્વીય ઉપદેશો અને લેખન સાથે સમજણના સ્પર્શથી પુનર્જન્મનો ખ્યાલ પાછો આપ્યો. પ્રશ્ન એ થાય કે સંપૂર્ણ વાસ્તવિકતા છે કે સત્યને જાણવું છે કે સત્ય છે ખરું? તો દરેક મનુષ્યનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે કે સત્યને જાણી શકાય છે અને એનો જવાબ હામાં જ છે. આમ સત્ય એક હોવા છતાં એને સમજવા માટેના ઘણા ભાગો છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અનુસાર જ્ઞાન યોગ, રાજયોગ, ભક્તિ યોગ અને કર્મયોગ. તો દરેક સ્વભાવના માણસો માટે એક અલગ માર્ગ છે. તે વધુ ઇચ્છનીય પણ લાગે છે, પરંતુ આ ચારમાંથી કોઈ પણ માર્ગ કોઈ ધ્યેય ઉભો કરી શકતો નથી સત્ય માટે. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાન પ્રત્યે વધુ તીવ્ર હોઈ શકે છે, પરંતુ એ જ સમયે તે એના ગુરુ પ્રત્યે પણ સમર્પિત હોઈ શકે છે. અહીં ગુરુ અને સમર્પિત શિષ્યનું ઉદાહરણ છે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને સ્વામી વિવેકાનંદ, જેમને પશ્ચિમમાં હિન્દુ ધર્મનો પરિચય કરાવ્યો હતો. ઓકે સર, થેન્ક યુ. इंटरनेट के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ शुरू में, लेकिन बहुत बढ़िया हो गया. और अर्चना जी, मैं आपका संक्षिप्त में परिचय देता हूँ, उसके बाद आपको 9 मिनट में समापन करना है पहले भाग का. अर्चना मुंशी जी का परिचय देने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ बड़ौदा, क्योंकि उन्हें बीएससी माइक्रोबायोलॉजी तो मुंबई से किया, लेकिन मास्टर्स किया बड़ौदा से. और वे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम करती थी. लेकिन सबसे बढ़िया बात जो उनके बारे में है कि वो स्कूल कॉलेज में प्ले तो करती थी, लेकिन गुजराती और हिंदी और इंग्लिश ये तीनों में उन्होंने प्रोफेशनल लेवल पर भी नाटक किए हैं और भारत ही नहीं यूएस वगैरह का भी पूरा टूर किया है. उन्होंने FTII पुणे से कोर्स किया है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में असिस्ट किया है और कॉर्पोरेट फिल्म्स भी बनाई हैं. वे ऑल्टरनेट मेडिसिन की प्रैक्टिशनर भी हैं, नेचुरोपैथी में बिलीव करती हैं और डिग्री भी उन्हें हासिल है. और उन्होंने थियोसॉफी 2010 से ज्वाइन की और वे सक्रिय कार्यकर्ता हैं ज्योति लॉज की और त्रिवेणी मीट की. तो आइए, आपका स्वागत है और हिंदी में आप वार्तालाप करें. धन्यवाद. धन्यवाद तरल जी. और सबसे पहले धन्यवाद दीपा पादी जी का कि जिन्होंने इतनी सुंदर रीत से गीता और इसके बारे में बताया और मुझे एक तक मिली, एक चांस मिला कि मैं इसे ट्रांसलेट करूं. आप लोगों की अनुमति से मैं शुरू करती हूँ. दीपा जी ने शुरुआत की. एम आई ऑडिबल इनफ? यस यस, कंप्लीट. उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उद्घोष के साथ HPB के शुरुआत की. उन्होंने कहा कि HPB कहते थे हम इस काम को शुरू करेंगे जहां तक भगवद गीता के गूढ़ अर्थ की अनुमति दी गई है. हमारे कुछ पाठक विशेष रूप से हिंदू इस अमर प्रभाव की छिपी भावना और अरहत तिब्बती सिद्धांत के बीच लगभग पूर्ण पहचान की खोज करने के लिए निसंदेह और चकित होंगे, जिसे टुकड़ों और अन्य लेखों में प्रदान किया गया है. यह वाक्य थे HPG मैडम ब्लावेत्स्की के भगवद गीता की शिक्षाओं में पाई जानी कुछ सामान्य अवधारणाओं और अपनी बात देने के विचार से. तो इसी से हम शुरुआत करते हैं. ये थियोसॉफी और भगवद गीता के बीच घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करता है.
गीता में कही गई कई अवधारणाएं और नुकसान प्रतीकों के रूप में मिलते हैं, जिन्हें मैडम ब्लावात्स्की ने सामने लाया और पश्चिमी दुनिया के लिए समझने की योग्य तरीके से समझाया। थियोसॉफी में मैडम ब्लावात्स्की की शिक्षा है, यह सबसे अच्छा हिंदू धर्म है। महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा। ऐसा कहा जाता है कि थियोसॉफी के माध्यम से ही गांधी जी भगवद गीता के प्रति आकर्षित हुए और शुरू में लंदन में अंग्रेजी थियोसॉफिस्ट के साथ उन्होंने थियोसॉफी का वांचन शुरू किया था। हाँ, ये सच है कि थियोसॉफिकल साहित्य में वर्णित अधिकांश आध्यात्मिक सिद्धांत हिंदू धर्म ग्रंथों और दर्शन जैसे भगवद गीता और उपनिषद में पाए जाते हैं, लेकिन थियोसॉफी केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह किसी धर्म का अनन्य अधिकार नहीं है। थियोसॉफी एक धर्म नहीं है जिस अर्थ में हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। धर्म सत्य नहीं है। प्रत्येक धर्म केवल आंशिक रूप से ही सत्य है। मैडम ब्लावात्स्की थियोसॉफिक समाज के पहले उद्देश्य के रूप में मानवता के भाईचारे के, बहन श्रम के या सिस्टरहुड के सहित सार्वभौमिक भाईचारे की बात करती हैं, जबकि अन्य धर्म बौद्ध धर्म के भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू धर्म के भाईचारे की बात करते हैं, मुसलमान धर्म के भाईचारे की बात है। इस तरह जो विभाजनकारी और आंशिक रूप से ही सत्य है, इसीलिए धर्म सत्य नहीं है, लेकिन सत्य शायद धर्मों के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। सत्य सभी धर्मों से ऊपर है। वास्तव में सत्य ही धर्मों का सार है। सत्य नास्ति परो धर्म। इसीलिए थियोसॉफी का आदर्श वाक्य सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर ये सत्य है क्या? सत्य शुद्ध पूर्ण चेतना है जो एक और से सभी पवित्रता है। ये दुनिया की किसी भी अभिव्यक्ति के पीछे है। हालांकि इसे ब्राह्मण, बुद्ध, भगवान और कई अन्य नामों से अलग नाम दिए गए हैं। यही विचार भगवद गीता में भी व्यक्त किया गया है, जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए श्लोक में कहते हैं, जिसका अर्थ ऐसा निकलता है कि सभी धर्मों से ऊपर उठो क्योंकि वो मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका अर्थ है सत्य, परब्रह्म, शुद्ध और पूर्ण चेतना। कृष्ण यहाँ शाश्वत, अदृश्य और एक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी व्यापक है। गीता को सार्वभौमिकता के रूप में माना जाता है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति भगवद गीता पढ़ सकता है और व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है। यह एक बार विश्वास और आध्यात्मिक विकास के लिए है। इस पूर्ण चेतना के माध्यम से सभी प्राणी, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार के स्वर्ग जैसे गीता में 7 अध्यायों के 7 श्लोकों में मिलता है। यहाँ कहते हैं कि मुझसे ऊंचा कुछ भी नहीं है। ओ धनंजय, यह सब मुझ में एक तार में रत्नों के गुच्छों के रूपों में बंधा है। कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, या दूसरे शब्दों में मैं हर चीज में हूं। यहाँ एक किस्सा उन्होंने बहुत अच्छे से साझा किया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अपनी बेटियों की शादी के लिए सोने के आभूषणों के हार, कंगन, कमरपट्टा, बालियां, नथनी, अंगूठी आदि खरीदता है। उसे सभी चीजों के एक बॉक्स में डाल दिया और उन्हें बंद कर दिया। सुबह उसने 8 साल के बेटे को चाबी दी और कहा कि बॉक्स से सोना ले आओ। उसने बेटे ने बॉक्स की चाबी ले ली, बॉक्स को अच्छी तरह से खोला, देखा और वापस चला गया। उसने अपने पिता से कहा, मैंने बॉक्स की तलाशी की मगर उसमें कोई सोना नहीं मिला, कृपया आप आके स्वयं देखें। पिता ने जाकर उस बॉक्स में गहने दिखते हुए कहा, बेटा सोना अलग अलग रूप में है। इन गहनों के घटक के प्रत्येक परमाणु में सोना है। वास्तव में यह आभूषण और कुछ नहीं बल्कि सोने का है। इसी तरह चेतना हर जगह प्रकट होती है। प्रत्येक प्रकट वस्तु किसी न किसी रूप में उसकी अभिव्यक्ति है। यह अपने आप में एक परम चेतना है जिसकी हमारी अपनी चेतना एक व्यक्तिगत इकाई है। भगवद गीता और मैडम ब्लावात्स्की दोनों का यही मत है। भगवद गीता के 10वें अध्याय की दुनिया की कल्पना एक जीवित जीव के रूप में की गई है। एक विशाल अनसंबंध, एक लौकिक सद्भाव, एक सर्वोच्च इकाई में फैला हुआ और कायम है। यद्यपि उसकी उपस्थिति हर चीज और अस्तित्व में महसूस की जा सकती है। ये दूसरों की तुलना में कुछ अधिक प्रकट होता है।
जैसे पहाड़ियों के, कृष्ण ने कहा कि पहाड़ियों की चोटी के बीच मैं अपने आप को मेरु में जानता हूँ, अचल वस्तुओं में हिमालय, अग्नि में वासु, समस्त शस्त्रों में वज्र, पक्षियों में गरुड़, पशु में सिंह, नदियों में गंगा आदि। इसका उद्देश्य भी सभी अस्तित्व के बीच एक बिल्कुल अचूक समझ विकसित करना है, मनुष्य और प्रकृति या ब्रह्मांड की एकता, और ये मैं महसूस करना है कि दोनों की एकता ही है। इसी तरह एचबीबी कहती है कि गूढ़वाद ब्रह्मांड में कुछ भी अकार्बनिक स्वीकार नहीं करता है। विज्ञान अकार्बनिक पदार्थ द्वारा नियोजित अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है ये हो सकता है कि अव्यक्त जीवन अगले पैटर्न या तथाकथित अणुओं में सो रहा है, संघने है। ये सारा जीवन हालांकि हमारी समझ और धारणा से परे है। ये एचपीबी का वाक्य था। यहाँ एचपीबी भौतिकवादी विज्ञान को चुनौती देती हुई कहती है कि क्योंकि हम किसी भी विज्ञान को देख नहीं सकते, जिसके द्वारा हम चेतना को पहचान नहीं सकते, हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वहां कोई चेतना मौजूद नहीं है। मैडम ब्लावत्स्की ने कर्म और पुनर्जन्म के नियम पर भी विचार किया, जैसा कि भगवद गीता में अधिक ठोस और तार्किक से उल्लेख किया गया है। मैडम ब्लावत्स्की ने, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को कर्म के नाम से परिचित कराया, थियोसॉफी जीवन की सभी समस्याओं को कर्म के नियम के माध्यम से समझाती है, जो आधुनिक बुद्धि के लिए एक बड़ी अपील है। हालांकि मैडम ब्लावत्स्की के शब्दों में, कुंजी कर्म का नियम ब्रह्मांड का अंतिम नियम है। प्रत्येक आत्मचेतन प्राणी इस नियम से बंधा हुआ है। इस नियम से ब्रह्मांड में न्याय कायम है। कर्म से बचने का प्रयास बनाना है। थियोसॉफी की कुंजी में वे कहती हैं कि कर्म और सत्य को समझने के लिए आपको शिक्षा या तत्व मीमांसा की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में कर्म के नियम की चर्चा करते हुए इस नियम के संबंधित 3 प्रकार के कर्मों को जानना आवश्यक है। नंबर पहला, संचित कर्म, कुल संचित कर्म जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो पहले से ही ऑपरेशन में है, जैसे कि जन्म के अच्छे और बुरे का पर आधार जीवन की घटनाएं कर्म प्रारब्ध कर्म उत्पत्ति में शामिल है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के साथ जीवन भर जुड़े रहने के लिए अनिवार्य ऑपरेटिव कार्मिक बल के रूप में माना जा सकता है, जैसे जन्म से मृत्यु तक। और तीसरा, क्रियमान कर्म, वर्तमान जीवन के ताजा संचित कर्म जो अगले जन्म में फल देना शुरू करेंगे। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि प्रारब्ध कर्म पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि किसी विशेष परिवार या वातावरण में एक का जन्म होना वर्तमान जीवन में मनुष्य का क्रियामान कर्म पर पर्याप्त निर्णय है। यदि कोई कर्म करने का सही तरीका चुनता है और स्वार्थी इच्छा और आचरण को हटाकर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझता है, तो वह एक नए कर्म के संचय को रोक सकता है। यह एक क्रिया कर्म है और संचित कर्मों के संचालन को ये समाप्त कर सकता है। हम अतीत को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय अपने भविष्य को गतिशील रूप से ढाल सकते हैं। हमें वर्तमान जीवन और अवसर या उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बाधा बनाने का विकल्प दिया गया है। चुनाव हमारा है। थियोसॉफी भी इस मत का है कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। मैडम ब्लावत्स्की ने बहुत ढेर शताब्दी बाद पूर्वी शिक्षा और लेखन के समझ के स्पर्श से पुनर्जन्म की अवधारणा को उन्होंने वापस लाए। सवाल उठता है कि इस परम सत्य या सत्य को जानना संभव है जो हर इंसान जन्मसिद्ध का अधिकार है? इसका उत्तर है हाँ, है। हालांकि सच्चाई एक है कि इसे महसूस करने के लिए कई हिस्से हैं। भगवद गीता में वर्णित मुख्य रूप से 4 भाग है: ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग और कर्म योग। प्रत्येक स्वभाव के लिए जो एक सड़क है वह अधिक वांछनीय प्रतीत होती है, लेकिन लक्ष्य इन चारों में से किसी एक द्वारा उठाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति ज्ञान के प्रति अधिक तीव्र हो सकता है, लेकिन साथ ही वह अपने गुरु के प्रति समर्पित भी हो सकता है। और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद जी का, जिन्होंने पश्चिम में हिंदू धर्म की शुरुआत की थी, उन्होंने प्रचलित किया था। स्वामी रामकृष्ण देवी माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। वो अक्सर देवी काली से बात करते थे। तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उन्होंने कभी किसी शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपनी देवी काली में जबरदस्त आस्था थी।
वह एक साथ घंटों प्रवचन दे सकते थे, जिसने एक परम सत्य के बारे में उनकी गहन समझ को संकेत दिया। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद ज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान बुद्धिजीवी थे। फिर भी वह अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण के भक्त थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने बयान भी दिया है और कहा, मेरे गुरु बाहर से भक्त थे और ज्ञानी भीतर से। मैं बाहर से ज्ञानी हूं और भीतर से भक्त हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। दीपा जी, आप आमंत्रित हैं अपने भाग 2 के लिए। थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ है दीपा जी। हाँ हुआ जी, कहिए, हो गया अनम्यूट। अरे वो लॉग आउट हो गई शायद। सर्च करिए अर्चना जी। वर्षा दी 2 हो गई। जी नहीं है दीपा जी। हाँ वो लॉग आउट हो गया शायद। ओ, क्या करें? 1 मिनट राह देख के, नहीं तो वर्षा जी आ जाए मैदान में। कॉल करता हूँ जी। कॉल लग नहीं रहा है, तो आई थिंक मैं वर्षा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे भाग 2 के लिए शुरू करें। वो आएंगे तो हम उनसे फिर बीच में ले लेंगे। हाँ सर, वच्चेथी મને કહી દેજો તો હું जी। અટકી જઈશ। ઓકે, તો શરૂ કરું છું જ્યાંથી હું પ્રથમ ભાગમાં અટકી હતી। તો સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસની વાત થઈ હતી। તો જે કહે છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના ગુરુ વિશે કહે છે કે તેઓ બહારથી ભક્ત હતા પરંતુ અંદરથી જ્ઞાની હતા, જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ જે છે એ બહારથી જ્ઞાની છે અને અંદરથી ભક્ત છે। તો આ વાત એમને કીધી હતી। આગળ હવે આપણે જોઈએ તો થિયોસોફિકલ સાહિત્ય અથવા ધાર્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોનું જે અપડેટ છે એ વર્તમાન સમયમાં ખૂબ જ આવશ્યક છે। વ્યક્તિને તેમની સ્પષ્ટ સમજ હોવી જ જોઈએ તથા જાણીતા આધ્યાત્મિક શિક્ષકોને સાંભળવા જોઈએ। સાથે થિયોસોફિકલ અને ફિલોસોફિકલ ખ્યાલોની પણ ચર્ચા સાંભળવી જોઈએ, જે અન્ય મહત્વાકાંક્ષી જિજ્ઞાસુઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે। આ ગીતાના જ્ઞાન યોગનો અનુરૂપ છે। થિયોસોફીમાં ધ્યાન એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે। આપણે એ શોધવાની જરૂર છે કે આપણી અંદરની સાર્વત્રિક ચેતના એ આપણી વ્યક્તિગત ચેતના છે। આપણી સ્વ અને વ્યક્તિગત ચેતના વૈશ્વિક ચેતનાથી અલગ નથી, જેવી રીતે સમુદ્રના મોજા એ સમુદ્રથી અલગ નથી। સાથે જેવું ઉપર છે એવું જ નીચે છે। સાથે કબાલિસ્ટોનો જે સિદ્ધાંત છે અને શિવ સૂત્રોમાં પણ આ જ સમાન વિધાન આપણને જોવા મળે છે, જેનો અર્થ થાય છે કે જીવનની પ્રવૃત્તિઓનું નીચલું સ્તર આચાર્ય તરીકે ઉચ્ચ સ્તરે થતી પ્રવૃત્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। મેક્રો ઓર્ગેનિઝમ અને સૂક્ષ્મ જીવો સમાન છે। ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે કે હું તમામ જીવોના હૃદયમાં છું। વૈશ્વિક ચેતના ક્યાંય બહાર નથી, એ આપણા સર્વની અંદર છે। તેથી તેને સમજવા માટે આપણે અંદર જવું પડશે, જેના માટે ધ્યાનની જરૂરિયાત છે। ગીતા પરનો આ રાજયોગનો માર્ગ છે, જે આપણને ધ્યાનની ખૂબ જ
ઊંડાણપૂર્વકની સમજ આપે છે. સેવા. જો મારામાં અને બીજા બધામાં જે ચેતના છે એ એક જ છે તો મારા અને બીજામાં કોઈ આવશ્યક ભેદ નથી. ધ યુનિટી ઓફ લાઈફ. આથી તેની પીડા અને વેદના એ મારી બની જાય છે. અન્યના હૃદયમાં સહાનુભૂતિ અને કરુણા જાગે છે. બ્લેવટ્સ્કીના ઉપદેશ અનુસાર પરોપકાર એટલે નિસ્વાર્થતા. એ થિયોસોફીનો મુખ્ય ખ્યાલ છે. તે બીજાને નિસ્વાર્થ સેવા છે. આપનું દહપાણ એ આપણી ક્રિયામાં અભિવ્યક્ત થવામાં છે. પરોપકારી ક્રિયાઓ નિષ્કામ કર્મ છે, જેમ કે ભગવદ્ ગીતામાં તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ છે પોતાની ઈચ્છાઓને ઓછી કરવી અને ક્રિયાઓ એટલે કે કર્મ વધારે કરવું, જે અન્યના કલ્યાણ માટે કરવામાં આવે છે. સાથે કરુણા, સહાનુભૂતિ, દયા અને પ્રેમની પણ જરૂર છે. મહાત્મા ગાંધી કહેતા, જો તમારે પોતાને જાણવું હોય તો બીજાની સેવામાં તમારી જાતનો ઉપયોગ કરો. બીજાની સેવા કર્યા વિના તમારું જ્ઞાન અધૂરું છે. ભગવદ્ ગીતાના ઘણા બહાનાઓ તમને અહીં જોવા મળશે, જેના હેતુઓ વિના, ઈરાદાઓ અને ઈચ્છા વિના કાર્ય કરવું શક્ય નથી. હા, એ સાચું છે કે હેતુ વિના કામ શક્ય નથી, પરંતુ હેતુ નિસ્વાર્થ હોઈ શકે છે. તે બીજાના કલ્યાણ માટે હોઈ શકે છે. એકવાર એક આધ્યાત્મિક ગુરુ અને એમના શિષ્ય વચ્ચે સંવાદ થયો. શિષ્યએ ગુરુને પૂછ્યું કે આદરણીય ગુરુ, તમે આટલા વર્ષોથી જે શીખવ્યું એ હું કરીશ, યોગ અને ધ્યાન કરીશ, પરંતુ છતાં આ બધું હું કરું છું, પણ શાસ્ત્રોના અભ્યાસ પણ કરું છું, પણ હજી મને મારામાં કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ દેખાતી નથી, તો હું શું કરું? માસ્ટર એની તરફ સ્મિત કરે છે અને કહે છે કે તમારે હવે ધ્યાન, યોગ અને શાસ્ત્રોના અભ્યાસની સાથે વધારે સેવાની જરૂર છે. અન્યની સેવા વ્યક્તિને અહંકારી ઓછો અને નમ્ર વધુ બનાવે છે. અહીં ગીતાના કર્મયોગની વાત કરી છે, જે સેવાનો માર્ગ બતાવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદ બુદ્ધને એક જ પ્રબોધક માનતા હતા, જેમને કર્મયોગના ઉપદેશોને આચરણમાં ખરેખર લઈ ગયા હતા. બુદ્ધને હું સલામ કરું છું અને તેમના એક ઉપદેશની વાત કહું છું. ભગવાન વિશે તમામ વિવિધ સિદ્ધાંતો જાણવાની મને પરવા નથી. આત્મા વિશેના સુટલ સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરવાનો શું ઉપયોગ છે? સારા બનો અને સારું કરો, અને આ તમને સ્વતંત્રતા તરફ લઈ જશે. જે પણ સત્ય છે, બુદ્ધે કહ્યું હતું કે અમુક જૂની હસ્તપ્રતો ઉત્પન્ન થાય તો એને માનશો નહીં. માનશો નહીં કારણ કે તે તમારી તર્કસંગત માન્યતાઓ છે, કારણ કે તમને તમારા બાળપણથી જ તે માનવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ એ બધાને કારણો આપો અને તેનું વિશ્લેષણ યોગ્ય રીતે કરો. પછી તમે શોધી શકો છો કે દરેકનું ભલું તે કરશે. એના ઉપર વિશ્વાસ કરો, ધ અલ્ટિમેટ રિયાલિટી પર. તેના પર જીવો અને અન્ય લોકોને તે પ્રમાણે જીવવામાં મદદ કરો. સેવાના સ્વરૂપ વિશે ઘણી ગેરસમજ છે. લોકો માને છે કે બધી સેવાઓ ફક્ત શારીરિક સ્તરે જ પ્રદાન કરવાની છે, પરંતુ આપણે શારીરિક, ભાવનાત્મક અને માનસિક 3 સ્તરે પ્રવૃત્તિઓને અનુક્રમે અભિનય, લાગણી અને વિચાર તરીકે ધ્યાનમાં અહીં લઈએ છીએ, અને ત્યારે જ આપણે અભ્યાસક્રમમાંના કોઈ પણ એંકમાં રેન્ક અથવા સેવા તરીકે આપણું નામ નોંધાવી શકીએ છીએ. મહત્વનું એ છે કે જે સેવા આપવામાં આવે છે એ પ્રકૃતિના તમામ સ્તરો સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ, અને એનું એકમાત્ર પરિણામ છે સંવાદિતા. ભક્તિનો બીજો એક ભાગ છે, જેનો બ્લેવટ્સ્કીએ વિશિષ્ટ રીતે એસોટરિક થિયોસોફીમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે સામાન્ય રીતે કોઈ ચોક્કસ કારણોસર સામાન્ય લોકો માટે નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ભક્તિ, વિશ્વાસ અને પ્રેમ એકઠા થાય છે. તેને ભક્તિયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્વામી ચિન્મયાનંદે સ્ટેટસ અને અવતરણ સાથે અહીં બતાવે છે કે ભક્તિનો માર્ગ માત્ર અસ્પષ્ટ કે ઉન્માદનો માર્ગ નથી. તે આપણી મર્યાદાઓને શરણાગતિ દ્વારા અને માનવના વ્યક્તિત્વને ખીલવવા માટે છે. સાથે ઊંડા ચિંતનની પ્રેરિત ક્ષણો દરમિયાન એ આપણને નવું જોમ પણ પ્રદાન કરે છે. ભક્તિ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય. આપણે આપણા આધ્યાત્મિક ધ્યેયમાં વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર છે. એટલે કે આપણી પોતાની જાતને ઓળખવી, નહીતર આપણે કેવી રીતે પ્રગતિ કરી શકીએ? વિશ્વાસ એ પક્ષપાતી અભિપ્રાય નથી. તેને સાંપ્રદાયિક વલણ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. વિશ્વાસ આપણને દિશા, આશા અને સ્થિતિસ્થાપકતા આપે છે. તે આપણા સ્વભાવનો આધાર છે. બાઇબલમાં કહેવાયું છે કે આપણે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ, દ્રષ્ટિથી નહીં. તેથી તે વ્યક્તિ જેવો વિશ્વાસ ધરાવશે એવો જ તે બનશે. જ્યારે શ્રદ્ધા સ્થાપિત થાય છે ત્યારે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. હું કહું છું તેમ ભક્તિ એ સર્વોચ્ચ સત્યની ભાવનાત્મક સમજ છે.
ભક્તિ એ આત્માની શક્તિ છે જે આપણા હૃદયમાંથી આવે છે અને ચેતનાના અલગ અલગ ક્રમ તરીકે એને સેટ કરાય છે. ભક્તિ વિના આપણા બધા પ્રયત્નોનો કોઈ અર્થ નથી. શુષ્ક ભક્તિ એ બધા માટે બિનશરતી પ્રેમ જેવી છે, બીજું કંઈ નહીં. છુપાયેલો પ્રેમ બધાને એકતાની સાંકળ સાથે બાંધે છે. ઓ હિડન લવ એમ્બ્રેસિંગ ઓલ ઇન વનનેસ. ગીતાના ચોથા અધ્યાયના 39મા શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે ભક્તિ અને શ્રદ્ધા ધરાવનાર વ્યક્તિ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આ તમામ માર્ગ અને પદ્ધતિઓ સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિમાં ફાળો આપે છે. કોઈ પણ માર્ગની શ્રેષ્ઠતાની વાત કરવી તો એ માર્ગ વિશેનું આપણું અજ્ઞાન જ હશે. એટલે કે અહીંયા સર્વે જ્ઞાન માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને રાજમાર્ગ જે છે એ એક સમાન જ છે. એમનું ડેસ્ટિની પોઈન્ટ એક જ છે એ બતાવે છે. તેઓ જોશે કે આ બધા 4 રસ્તાઓ અંતે એકમાં જ ફેરવાય છે. જ્ઞાનના પાયા તરીકે જ્ઞાન, પ્રેમ અને ભક્તિ તથા નિસ્વાર્થ સેવા આપણને એક અને એક જ ધ્યેય તરફ દોડી જાય છે, અને એ છે સત્યને જાણવું, જે સત્ય ક્યાંય બહાર નથી, આપણી અંદર જ છે. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના ઉપદેશો અને ભગવદ ગીતા બંનેનું સામાન્ય પાસું નૈતિકતા છે, જે આપણને સમાજના લોકો સાથે કેવી રીતે જીવવું અને કેવી રીતે વર્તન કરવું એ શીખવે છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં આ માટે કુલ 26 ગુણોની વાત કરી છે, અને આ 26 ગુણો જેના માટે ગીતામાં દૈવી સંપત્તિ એવો શબ્દ વાપર્યો છે. વર્તમાન સમયમાં આપણે જો એને કહીએ તો એ એક હકારાત્મક ગુણો અથવા તો સદગુણો એવું એનું નામ આપણે આપી શકીએ. આ ગુણો વ્યક્તિલક્ષી તથા સામાજિક પણ છે. તેમના જો નામ આપીએ તો નિર્ભયતા, આંતરિક સ્વની શુદ્ધતા, સ્થિરતા, નિયંત્રણ, મર્યાદા, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, સંન્યાસ, સત્યપરાયણતા, ઉચ્ચ આચરણ, શાંતિ, કરુણા, નમ્રતા, આજ્ઞાપાલન, સ્વચ્છતા વગેરે વગેરે. આ દેવી સંપત્તિ કે સદગુણોની સાથે ગીતામાં આસુરી સંપત્તિ અથવા તો શૈતાનની મિલકતની પણ વાત કરી છે, જે કુલ 11 છે. આ બધા નકારાત્મક ગુણો છે, જેમાં દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, ઉદ્ધતા, વાસના, ગંદકી, અજ્ઞાનતા, અયોગ્ય આચરણ, લોભ અને લાલચને ગણાવી શકાય. આ ગુણો વાસ્તવિક રીતે ખરેખર અસ્તિત્વમાં નથી, પરંતુ અજ્ઞાનતાને કારણે એ અસ્તિત્વમાં છે. આ નકારાત્મક આસુરી સંપત્તિ ડર અને પશ્ચાતાપ સાથે અપરાધીપણુની સાથે જોડાયેલી છે, જ્યારે જે મૂલ્યો, સદગુણો જે આપણને આનંદ, સંતોષ અને સ્વની યોગ્યતા આપે છે અને આપણા સ્વ સાથે સંકળાયેલા છે. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના સુવર્ણ સીડીમાં જે 13 ગુણોની યાદી છે તે સમાજમાં સભ્ય નાગરિક થઈને રહેવા માટે પર્યાપ્ત છે. જ્યાં સુધી વ્યક્તિ દયા, કરુણા, પ્રેમ, નિસ્વાર્થતા અને ત્યાગની ભાવના શીખશે નહીં, ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર એ આગળ વધી શકશે નહીં. અહીં શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી બંને માને છે કે જો વ્યક્તિની ઈચ્છા શક્તિ હશે તો સકારાત્મક ગુણો અર્થાત દૈવી સંપત્તિની ખીલવણી થઈ શકશે. હા, તે કાર્ય મુશ્કેલ જરૂર છે, પરંતુ અશક્ય નથી. થિયોસોફિકલ સોસાયટી કોઈ આચાર સંહિતા આ કરો કે આ ન કરો એવું લિસ્ટ આપણને આપતી નથી, પરંતુ દરેક સભ્યએ કેવું અને કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ એને વ્યક્તિગત નિર્ણય ઉપર છોડી દે છે, કારણ કે વિચારની સ્વતંત્રતા એ થિયોસોફીનો મૂળભૂત ખ્યાલ છે. ભગવદ ગીતામાં પણ મુશ્કેલીના સમયે યોગ્ય નિર્ણય કેવી રીતે લેવો એ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણને પૂરું પાડે છે. અર્જુનની મૂંઝવણ હતી કે લડવું કે નહીં, ખરેખર એક નૈતિક પ્રશ્ન છે જેનો સામનો આપણે રોજબરોજના જીવનમાં કરીએ જ છીએ. તો એને જ્યારે પોતાના અર્જુને નિમ્ન મનથી વિચાર્યું તો એને લાગ્યું કે તે હારી જશે. આથી એને કૃષ્ણ પાસે સલાહ માંગી. કૃષ્ણએ ઘણા પ્રશ્નોનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો, પરંતુ અંતે નિર્ણય લેવાનું કામ એમને અર્જુન ઉપર છોડી દીધું. અને આ જ બાબત થિયોસોફીની જેમ ગીતા પણ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા ઉપર ભાર મૂકે છે. અને અંતમાં બીજા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ અર્જુનની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શક્યા હોત અને ક્રિયાનો એક માર્ગ બતાવી શક્યા હોત, પરંતુ ગીતાનો સમાપન બીજા અધ્યાયમાં થઈ જાત. પરંતુ કૃષ્ણએ અનેક વિકલ્પો દ્વારા અર્જુનની આંખ ઉગાડી, તેના અજ્ઞાનને દૂર કરવાનું કાર્ય કર્યું, અને અંતે અર્જુનને પોતે જ તમામ શંકાઓ, સમસ્યાઓ, મૂંઝવણોથી મુક્તિ મળી ગઈ અને એક નૈતિક
પ્રશ્ન એક નૈતિક પ્રશ્નનો જે જવાબ છે એમણે નૈતિક રીતે પોતે સ્વતંત્ર રીતે લીધો. મેડમ બ્લેવટ્સ્કી પણ આ જ વાત કરે છે કે શિક્ષકનું કાર્ય માત્ર માર્ગદર્શકનું છે. શિષ્યએ સ્વયં પોતાનો જે માર્ગ છે, પોતાનો જે દીવો છે એ પોતે જ પ્રગટાવવાનો છે, જેના માટે ભગવાન બુદ્ધે કીધું છે કે અપદીપો ભવ. અહીં મહાન ફિલોસોફર લુડવિગનું પણ આવું જ એક પ્રખ્યાત નિવેદન છે કે શિક્ષકનું કાર્ય પાણી કે માખણમાં પડેલ માખી બતાવવાનું છે, પણ તે માખી કેમ કાઢવી એ શિષ્યએ પોતે જ શોધવાનું છે. થેન્ક યુ સો મચ. थैंक यू वर्षा जी, बहुत ही अच्छा रहा. और रचना जी, आपसे निवेदन है आप हिंदी में शुरू कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. जी. वो जुड़ रही हैं और आ रही हैं, लेकिन तो मैं रुकूं या शुरू नहीं, आप करूं? रुकिए मत, फ्लो टूट जाएगा. चलिए जी. मैडम ब्लावत्स्की ने अपनी शिक्षाओं में सत्य को महसूस करने के तरीकों या भागों का वर्णन किया है. वे हैं 1 अध्ययन, 2 ध्यान, 3 सेवा. ये तीनों जन के लिए जबकि विदेशी सिद्धांत के लिए है. उन्होंने भक्ति मांगी. यह सब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संश्लेषण का गठन किया. पहला अध्ययन है. थियोसॉफिकल साहित्य या धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन और वैज्ञानिक शोधों का अद्यतन आवश्यक है. अध्ययन बहुत करना जरूरी है. उनकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए और प्रख्यात आध्यात्मिक शिक्षकों को सुनना चाहिए और थियोसॉफिकल और दार्शनिक अवधारणाओं की चर्चा करनी चाहिए जो अन्य उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है. यही गीता के ज्ञान योग से मेल खाता है. 2 ध्यान दर्शन शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है. हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि हमारे भीतर वह सार्वभौमिक चेतना हमारी व्यक्तिगत चेतना है. हमारी आत्मा और व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से अलग नहीं है. जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं है, जैसा ऊपर है वैसा उतना नीचे है. इसी तरह के कथन शिव सूत्र में भी पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जीवन की गतिविधियों का निचला स्तर उच्च स्तर पर होने वाली गतिविधियों का प्रधानाचार्य के रूप में दर्शाता है. स्थूल जीव और सूक्ष्म जीव एक ही है. गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में हूं. सार्वभौम चेतना का कहीं बाहर नहीं है. यह हम में से प्रत्येक के भीतर है. इसीलिए इसे महसूस करने के लिए हमें भीतर जाना होगा, जिसके लिए ध्यान आवश्यक है. यही गीता पर राजयोग का मार्ग है. 3 सेवा. यदि चेतना जो मुझ में है और बाकी सब में है, तो मुझ में और दूसरों में कोई आवश्यक अंतर नहीं है. उसका दर्द और मेरा दर्द एक ही हो जाता है. दूसरों के दिल में सहानुभूति और करुणा जगाता है. ब्लावत्स्की का कहना है कि परोपकारिता के लिए, जिसका अर्थ है निस्वार्थता, थियोसॉफी की प्रमुख अवधारणा है. ये जी ये पॉइंट लेके हम दीपा जी की ओर चलते हैं. मैं बस सेवा शुरू ही होता, मैं यहाँ विराम लूंगी फिर. जी जी. Deepa ji, you can continue your second part. Archana ji will finish the remaining half after you. जी. Welcome back. Yes. In her teachings, Madam Blavatsky had prescribed the ways or paths to realize the truth. They are study, meditation, and service. We know all this. These 3 are meant for the mass, for general people, whereas for the esoteric theosophy, she added devotion. All this constituted synthesis for the attainment of the goal. First is study. Study of theosophical literature or religious scriptures and update of scientific researches are essential. One should have clear understanding of them and listen to eminent spiritual teachers and discussion of theosophical and philosophical concepts with other aspirants is also important.
This corresponds to the Jnana Yoga of Gita. Meditation is most important in theosophy. We need to find out that universal consciousness within us is our individualized consciousness. Our individualized consciousness is not different from the universal consciousness, as waves are not different from the sea. There is the Kabbalistic doctrine which states, as above, so below. Similar statements are found in Shiva Sutras, which means that the lower level of the life's activities reflect those taking place at the higher level as principles or laws. Macroorganism and microorganisms are the same. In Gita, Krishna says, I am in the heart of all living forms. Universal consciousness is not anywhere outside. It is within each one of us. Therefore, to realize it, we have to go within, for which meditation is necessary. This is the path of Raja Yoga in Gita. Service. If the consciousness which is in me and in everybody else, then there is no essential difference between me and others. His pain and suffering becomes mine. Empathy and compassion arouse in the heart of others. To Blavatsky, altruism, which means selflessness, is the key concept of theosophy. It is selfless service to others. Our wisdom is to get expressed in our action. Whatever knowledge, whatever we learn, that should be translated in our actions. Altruistic actions are niskama karma, as mentioned in Bhagwad Gita, which means not desireless, but selfless actions, which are done for the welfare of others. This needs compassion, empathy, kindness, and love. Knowledge is incomplete without doing service to others. In many verses of Bhagavad Gita, one finds mention of desireless actions, but it is not possible to act without motives, without intentions or desires. It is true that without motives or desire, work is not possible, but the motive can be selfless. Actions can be for the welfare of others, loka sangraha or sarvabhuta hiterata, as it is mentioned in Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi used to say, if you want to know your true self, your own self, lose yourself in the service of others. Once a spiritual master and his disciple were staying in an ashram. One day, the disciple asked the master, Gurudev, I have been doing what you taught me for so many years, like studying scriptures, doing yoga and meditation. Still, I don't find any spiritual progress in me. What do I do? The master smiled at him and said, you need to do more service. Service to others makes one egoless and humble. This refers to the karma yoga of the Gita, the path of service. Swami Vivekananda considered Buddha as a single prophet who had carried the teachings of karma yoga into practice. Buddha had said, and I quote, I do not care to know your various theories about God. What is the use of discussing the subtle doctrines about the soul? Be good and do good, and this will take you to the freedom and whatever truth there is. Unquote. Buddha was the first to say, believe not if some old manuscripts are produced. Believe not because it is your rational belief, because you have been made to believe it from your childhood, but reason it all out, and after you analyzed it,
then you find that it will do good to one and all. Believe it and live up to it and help others to live up to it. Unquote. There is a misconception about the nature of service. People think that all the services are to be rendered at physical level only. But when you consider our activities at the three levels, that is physical, emotional, and mental, as acting, feeling, and thinking respectively, we may render service at any one of the levels stated above, according to our limited capacity. What is important is that the service rendered must be in consonance with all the levels of the nature. Otherwise, disharmony would be the result. There is another part of devotion which Blavatsky mentioned in the esoteric theosophy. Another path of devotion mentioned in the esoteric theosophy, usually not meant for the people in general for a certain reason. Devotion, faith, and love go together. In Bhagwad Gita, it is known as Bhakti Yoga. Swami Chinmayananda states, and I quote, "The path of devotion is not a mere frivolous hysteria. It is the blossoming of human personality through surrender of our limitations and by acquiring new vitality during the inspired moments of deep contemplation." Unquote. What a beautiful definition of devotion. Devotion is possible only when there is firm faith. We need to have faith in our spiritual goal, that is to realize our own self. Otherwise, how can we progress? Faith is not a biased opinion. It has nothing to do with sectarian attitude. Faith gives us direction, hope, and resilience. It is the very basis of our nature. In Bible, it is said, we walk by faith, not by sight. Therefore, it is said, as is the faith, so is the person. When faith is established, devotion arises. Devotion is the emotional understanding of the highest truth. Devotion is the sole power that comes from our heart. It can be said to be a different order of consciousness. Without devotion, all our endeavors doesn't carry any meaning. They become dry. Devotion is unconditional love, love for all. As our universal prayer says, "O hidden love, embracing all in oneness." In Gita, 4th chapter, 39 verse, it is said that a person with devotion and faith obtains highest knowledge. All these paths and methods are equally important as they contribute to the attainment of the goal. To speak of the superiority of any one of the path will be ignorance of one. All these four paths at the end converge into one leading us to one and the same goal, which is nowhere out but within oneself. Another important aspect one finds in the writings of Blavatsky and Bhagwad Gita is the ethics, how to live and behave with others, staying in a society. In Bhagwad Gita, one finds 26 ethical values or positive qualities, which are typically termed as Daibi Sampat. In Sanskrit, Dibya means Dibya means godly, and Sampat means property. So these are divine properties or properties of the soul. Most of the values are subjective and social in their application. I would like to just name them: fearlessness, purity of inner self, steadfastness, charity, control of sense organs, sacrifice, study of scriptures, asceticism,
brightness, mental balance, truth, even temper, renunciation, attitude, peace, compassion, gentleness, modesty, brilliance, obedience, cleanliness, non-slanderousness, an absence of overestimation, freedom from hate, absence of conceit, and forgiveness. The list of all these values are mentioned in Bhagwad Gita under the title Asuri Sampat, the demonic qualities of property. These are the negative qualities, which I'm going to say. These are negative qualities. They are 11. They do not exist objectively. Their existence is due to ignorance. They are hypocrisy, arrogance, pride, anger, insolence, lust, ignorance, absence of purity, absence of right conduct, and greediness. These values are associated with the feelings of compulsion, regression, fear, and guilt, whereas values are always associated, these are the negative values, we can call it negative values, the Asuri Sampat, and these are associated with the feelings of compulsion, regression, fear, and guilt, whereas the positive values and the Daiva Sampat are always associated with feeling of joy and happiness, satisfaction, and self-competence. In Madame Blavatsky, Madame Blavatsky's Golden Stairs, one finds list of qualities which are necessary for interacting with others in a society. Unless one learns to live in the relationship of kindness, compassion, love, selflessness, and empathy, one cannot proceed in a spiritual path. Both Bhagavad Gita and Madame Blavatsky believe that the positive qualities or the values can be cultivated if one has the willpower to do so. It is difficult, no doubt, but not impossible. Theosophical society does not provide code of conduct or ethics which members must live. Well, there is no compulsion. Decisions are left to each member. Freedom of thought is the fundamental concept of theosophy. In Bhagavad Gita, one gets a good instance of moral dilemma and decision making. Arjuna was in a great moral dilemma, whether to fight or not to fight. He thought in his limited perception that either way he would be a loser. Therefore, he requested Krishna for advice. Tell me by certainty by which I can attain the highest good or moksha, that is liberation. But instead, at the end of the discourse, Krishna said, think over this fully and do whatever you think to be the best. Jatischasi tatha kuru. Do whatever you think to be the best. Individuals' freedom in a decision making is emphasized throughout the Gita. Krishna could have solved Arjuna's problem in the second chapter itself and resolved his dilemma by pointing out one course of action, that you fight. Then the divine poem of Gita would have ended there itself. But Krishna carried on his discourses by placing before him different alternative courses and making the dilemma more genuine till Arjuna gained equability of reason and could take correct moral decision for himself and said in the last chapter, now my ignorance is destroyed and I gain my memory, which is true knowledge through your guidance, and my doubts are clear and I will abide by your words. As you see, both Madame Blavatsky and Gita agree as regards decision making, and both believe that the teacher or the guide has to just light the lamp. This reminds me of a great philosopher, Western philosopher, Ludwig Wittgenstein, who had made a profound statement that the function of a philosopher or a master
is to show the fly out of the fly water. It was a great pleasure seeing you all and sharing with you some of my thoughts. Thank you very much. Thank you, Deepa ji. And now Archana ji, I will request you to please go ahead with the remaining part. Thank you. जी यहाँ हमने 3 गुण के बारे में जाना, सेवा तक। सेवा यदि चेतना जो मुझ में है और बाकी सब में है, तो मुझ में और दूसरों में कोई आवश्यक अंतर नहीं है। उसका दर्द मेरा हो जाता है, दूसरों के दिल में सहानुभूति और करुणा जगाती है। ब्लावत्स्की जी का कहना है कि परोपकारिता के लिए, जिसका अर्थ है निस्वार्थता, थियोसॉफी की प्रमुख अवधारणा है। ये दूसरों की निस्वार्थ सेवा है। हमारी बुद्धि हमारे कार्यों में अभिव्यक्त होता है। परोपकारी कर्म निष्काम कर्म है, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है इच्छा रहित कर्म जो दूसरों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इसके लिए करुणा, सहानुभूति और दया और प्रेम की आवश्यकता है। भगवद गीता के अनुसार कई बार आप पाते हैं कि बिना इरादे और इच्छा के कार्य करना संभव नहीं है। हाँ, ये सच है कि बिना मकसद के काम संभव नहीं है, लेकिन मकसद निस्वार्थ हो सकता है। ये दूसरों का कल्याण के लिए हो सकता है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा में स्वयं का उपयोग करें। दूसरों की सेवा के बिना ज्ञान अधूरा है। इसी का एक बहुत सुंदर उन्होंने एक वार्ता कही कि एक बार एक आध्यात्मिक गुरु उनके शिष्य और एक आश्रम में रहते थे। एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा कि आदरणीय गुरु जी, जो आपने इतने वर्षों तक पढ़ाया मैं वही करूंगा, जैसे शास्त्रों का अध्ययन कराना, योग, ध्यान, सभी आपने जो आध्यात्मिक प्रगति का बताया वो सब मैं कर रहा हूं, मगर मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं रही है, मैं करूं क्या? गुरु उस पर मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें और सेवा करने की जरूरत है। दूसरों की सेवा व्यक्ति को अहंकार रहित और विनम्र बनाती है। यही गीता के कर्म योग का सेवा का मार्ग बताता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बुद्ध को अकेला भविष्यवक्ता यानी सिंगल प्रॉफिट माना, जिन्होंने कर्म योग की शिक्षाओं को व्यवहार में लाया था। बुद्ध ने कहा था, कोट, मुझे परवाह नहीं है कि मैं ईश्वर के बारे में आपके विभिन्न सिद्धांतों को जानता हूं। आत्मा के बारे में कुटिल सिद्धांतों पर चर्चा करने से क्या फायदा? अच्छा बनो और अच्छा करो, और ये तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, चाहे जो भी हो सत्य हो। कोट फिनिश। बुद्ध ने सबसे पहले यह भी कहा था, विश्वास मत करो। अगर कुछ पुरानी पांडुलिपियों का उत्पादन लाया जाता है, किया जाता है, तो विश्वास न करें, क्योंकि यह आपका तर्क संगत विश्वास है, क्योंकि आपको इसे बचपन से ही विश्वास करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका कारण बताएं और इसका विश्लेषण करने के बाद आप पाते हैं कि वह सबका भला करे। उस पर विश्वास करें और उस पर खरा उतरे, और दूसरों को भी उस पर खरा उतरने में मदद करें। यह बुद्ध ने कहा था। सेवा की प्रकृति के बारे में एक भ्रांति भी है। लोग सोचते हैं कि सभी सेवाओं को केवल भौतिक स्तर पर प्रदान किया जाता है, लेकिन जब हम 3 स्तरों पर अपनी गतिविधियों को मानते हैं, जो कि शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक क्रमशः है, जैसे कि अभिनय, भावना और सोच के रूप में है, तो हम किसी एक पर सेवा कर सकते हैं, या जो भी हमारी सीमित क्षमता से। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदान की गई सेवा प्रकृति के सभी स्तरों के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा ये सामंजस्य परिणाम होगा। भक्ति का एक और हिस्सा है जिसका ब्लेवात्स्की ने गूढ़ सिद्धांतों में उल्लेख किया है, जो आमतौर लोगों के लिए निश्चित कारण नहीं हो सकता। भगवद गीता में भक्ति, विश्वास और प्रेम को इकट्ठा साथ ही होता है, कहते हैं। इसे भक्ति योग के रूप में जाना जाता है। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, भक्ति का मार्ग केवल उन्माद नहीं है, ये हमारी सीमाओं के समर्पण के माध्यम से मानव व्यक्तित्व को खिलना है, और इस गहन चिंतन के प्रेरित क्षण दौरान नई जीवन की शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तभी संभव है जब दृढ़ विश्वास हो। हमें अपनी आध्यात्मिक लक्ष्य में विश्वास रखना चाहिए। यदि हम अपने आप को पहचाने नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आस्था पक्षपाती नहीं है।
इसका सांप्रदायिक रवैये से कोई लेना देना नहीं है। विश्वास हमें दिशा, आशा और लचीलापन देता है। ये हमारी प्रकृति का मूल आधार है। बाइबल में जैसे कहा गया है कि हम दृष्टि से नहीं विश्वास से चलते हैं। इसीलिए जैसा विश्वास होता है वैसा ही व्यक्ति भी होता है। जब आस्था स्थापित हो जाती है तो भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति जैसा ही कहते हैं कि उच्चतम सत्य की भावनात्मक समझ है। भक्ति वह आत्मा शक्ति है जो हमारे दिल से आती है। इसे चेतना का एक अलग क्रम निर्धारित किया जा सकता है। भक्ति के बिना हमारे सभी प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति सभी के लिए बिना शर्त प्रेम प्रेम ही है। जैसे कि सार्वभौमिक अपनी प्रार्थना कहती है, हे छुपे प्रेम सभी को एकता में गले लगाए, ओ हिडन लव। गीता में 4th अध्याय में 39 श्लोक में कहा गया है कि भक्ति और विश्वास वाला व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता है। ये सभी मार्ग और विधियां के समान रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान करती हैं। किसी भी मार्ग की श्रेष्ठता की बात करना एक अज्ञानता ही होगी। वे पाएंगे कि अंत में सभी 4 मार्ग एक में ही परिवर्तित हो जाते हैं। हम पाते हैं कि अंत में ये सभी 4 भाग एक हो जाते हैं और एक सभी ज्ञान, ध्यान, भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ सेवा हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है। वह है उसी सत्य को जानना जो हमारे भीतर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। मैडम ब्लावेत्स्की लेखन और भगवत गीता के दोनों में एक महत्वपूर्ण पहलू का एक सम्मेलन है कि वो कहते हैं समाज में रहने वाले अन्य लोगों के साथ कैसे रहना और व्यवहार करना। भगवत गीता में 26 गुणों का वर्णन किया है। नैतिक मूल्य या गुण जो पाए जाते हैं जिन्हें आमतौर पर दिव्य संपत्ति कहा जाता है। संस्कृत में दिव्य का अर्थ है ईश्वरीय और संपत्ति का अर्थ है संपत्ति, तो इसका अर्थ हुआ दैवीय गुण। वर्तमान दुनिया में हमें उन सकारात्मक गुण या सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। उनके आवेदन में अधिकांश मूल्य व्यक्तिपरक सामाजिक भी हैं। उनके सिर्फ कुछ नाम हैं: निडरता, आंतरिक स्व की पवित्रता, सीधी स्थिरता, दान, इंद्रिय अंग का नियंत्रण, बलिदान, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, चमक, मनुष्य संतुलन, सत्य, यहाँ तक कि स्वभाव का उच्चारण, दृष्टिकोण, शांति, करुणा, नम्रता, विनय, प्रतिभा, आज्ञाकारिता, स्वच्छता और अधिक अनुमान करने की अनुपस्थिति। इन सभी मूल्यों की सूची का उल्लेख भगवत गीता में भी है, जिसका शीर्षक और जिसका एक असुरी संपत्ति या राक्षसी संपत्ति है, उनका भी उनमें उल्लेख है। ये नकारात्मक गुण हैं, वे 11 हैं और उनका अस्तित्व अज्ञान के कारण ही है। जैसे कोई है पाखंड, अहंकार, अभिमान, क्रोध, उतावलापन, वासना, अज्ञान, पवित्रता का अभाव, सही आचरण का अभाव, मिथ्या लोभ। ये आसुरी मूल्य मजबूरी, भय और अपराध बोध की भावना से जुड़े हुए हैं, जहां दिव्य गुण मूल्य हमेशा खुशी और खुशी की संतुष्टि और आत्म क्षमता की पूर्ति से जुड़े हुए होते हैं। मैडम ब्लावेत्स्की सुनहरी सीढ़ियों में उनके गुणों की सूची मिलती है जो एक समाज में आम लोग और अन्य लोग के साथ बातचीत करने के लिए बहुत आवश्यक है। जब कोई दयालुता, करुणा, प्रेम, निस्वार्थ और सहानुभूति के रिश्ते में छिड़ना नहीं सीखता, तब कोई आध्यात्मिक पथ पर वो आगे नहीं बढ़ सकता। भगवत गीता और मैडम ब्लावेत्स्की दोनों का मानना है कि सकारात्मक गुणों या मूल्यों की खेती यानी बढ़ाए जा सकते हैं यदि किसी के पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति है तो। मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो असंभव नहीं है। थियोसॉफिकल समाज आचार संहिता प्रदान नहीं करता है जिसके द्वारा सदस्य को जीना चाहिए। निर्णय प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से छोड़ दिए जाते हैं। विचार की स्वतंत्रता थियोसॉफी की मौलिक अवधारणा है। भगवत गीता में नैतिक दुविधा और निर्णय लेने का एक अच्छा उदाहरण मिलता है। अर्जुन एक बड़ी नैतिक दुविधा में था कि युद्ध करे या ना करे। उसने अपनी सीमित धारणा में सोचा कि किसी भी तरह से वह हारेगा, इसलिए उसने कृष्ण से सलाह मांगी, वो मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मैं जिससे सर्वोच्च या अच्छे या मोक्ष मुक्ति में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन
इसके बजाय कि कृष्ण प्रवचन के अंत में कहा कि इस पूरी तरह से विचार करें, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वह करें। ये कथा गुरु है, जैसे कि संस्कृत में कहा गया है कि व्यक्ति निर्णय लेने की स्वतंत्रता अपने आप पे रखे। वो गीता इसमें बहुत जोर देता है। कृष्ण ऐसे तो दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्या का समाधान कर सकते थे और एक क्रिया का संकेत देकर उनकी दुविधा का भी समाधान कर सकते थे, नहीं। मगर गीता की दिव्य कविता यहीं समाप्त नहीं हुई। कृष्ण ने विभिन्न वैकल्पिक प्रवचनों को अपने सामने रखकर अपने प्रवचनों को आगे बढ़ाया, जब तक अर्जुन ने तर्क की समानता अपने लिए सही नैतिक निर्णय प्राप्त नहीं कर लिया। और तब अंतिम अध्याय में कहा कि दुविधा को और अधिक वास्तविक बना दिया। तब अर्जुन बोलते हैं, अब अज्ञान से मेरी मंजिल नष्ट हो गई है। मैंने स्मृति से प्राप्त किया है जो सच्चा ज्ञान, सत्य या मार्गदर्शन, वो मेरे संदेह और वो दूर हो चुके हैं और मैं आपके शब्दों का पालन करूंगा। जैसे ही हम देखते हैं कि मैडम ब्लावेत्स्की और गीता दोनों निर्णय लेने के संबंध में सहमत है और दोनों का मानना है कि शिक्षक गाइड है जो सिर्फ दीपक जलाता है। इस स्मरण का एक इसी बात का एक महान दार्शनिक लुडविग के कथन से बहुत ही सुंदर से कहा गया है, एक दार्शनिक या शिक्षक का कार्य मक्खी को ये दिखाना है कि वो किस तरह से बेहतर से उड़ सके। इसी सुंदर विचार के साथ मेरा यहाँ हिंदी का ट्रांसलेशन खत्म होता है। Thank you so much, Deepa ji. Such an enlightening teachings you have given us. I'm so thankful and grateful. You have done your job very well. Beautifully translated, both Varsha and Archana. Thank you very much. I must give credit to Taral also. Yes, of course. He's the main person, you know. He did. Thank you so much. चलिए दीपा जी, ट्रांसलेशन सही रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तीनों का बहुत स्वागत है। वर्षा जी, आपने भी बड़े अल्प समय में ये किया, बहुत बहुत आभारी हूँ। यार, हम लोग थियोसॉफिस्ट हैं तो हमें हर वक्त तैयार रहना ही चाहिए किसी भी चैलेंजेस के लिए। और एक गोपाल जी ने क्वेश्चन पूछा है दीपा जी आपसे कि हाउ महात्मा गांधी केम इन टच विद थियोसॉफिकल सोसाइटी, या जो गीता वाली बात। The information which I have, I don't know whether it is true or not, but I had read it in a book that when Mahatma Gandhi was in London, there he had met Blavatsky, Madam Blavatsky, and with some discussion with her, she was very much attracted to Madam Blavatsky, and Madam Blavatsky told him to read Bhagwad Gita. Okay, this is what I had read somewhere, so I just wrote it. Thank you. I don't know whether, I mean, how he was associated. I think this is the first time he had met, for the first time he had met Blavatsky in London. Then, of course, when he came back to India, then he got, associated with Animation and others. That's a different story altogether. This is what. Thank you. Thank you. Yeah, thank you very much. Very interesting. Thank you, Dubal ji. Thank you, Deepa ji. And Uday Kumar ji, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया था। उदय कुमार जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से उसको न्याय दिया। खास तौर पर गीता का अर्थ ही ज्ञान है। विद्वानों कहता है गीता का अर्थ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान मिलता है वो संहिता गीता कहती है। जैसा कि अष्टावक्र और जनक का संवाद वो अष्टावक्र गीता है। लक्ष्मण और निषाद का संवाद जो मानस में है वो लक्ष्मण गीता कहता है। काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद है उसको काकभूषुंडी गीता कहता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है वो ही अपनी गीता है। जहाँ से ज्ञान मिलता है वो गीता हम कहते हैं, कह सकते हैं। हाँ, खासतौर पर बेसिकली ये बात बताया कि एक श्लोक में कहा है भगवान कृष्ण ने आखिर में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज, तो सर्व धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जा। तो ये बात रोहित मेहता ने बड़ी खूबी से बताया। उसने बताया कि थियोसॉफी सर्व धर्मों का सार ग्रहण करती है, अध्ययन करती है,
तो अपन को क्या चारों धर्म का अध्ययन करके એટલે अपना ज्ञान पूरा हो गया? तो रोहित मेहता ने बताया कि ना, ये सब जो टोटालिटी है सब धर्मों की, भाई हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म सब अपने पढ़ा, आत्मसात किया, सब किया, तो वो होल नहीं है। टोटालिटी रिलीजन की टोटालिटी है, वो होल नहीं है, इसमें भी कुछ बाकी रहता है। थियोसॉफी उसी की तरफ अपना दृष्टिपात करती है, परम तत्व चैतन्य, परम चैतन्य उसकी तरफ ले जाती है। जो कुछ बाकी रह जाता है होल में, वो समझाने के लिए थियोसॉफी, और वही बात कृष्ण ने कही, बहुत अच्छी तरह से कंपैरिजन मैडम ने किया। और ये आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का गुणों का भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन हुआ। सुवर्ण सीढ़ी का माध्यम से जो बताया, वो बात जो 9 गुण है उसका बड़ी सही ढंग से वर्णन किया, और कर्म का नियम को बड़ी अच्छी तरह से बताया। जी धन्यवाद। हाँ, सॉरी, दोनों ट्रांसलेटर डॉक्टर वर्षा पटेल और अर्चना मुंशी जी, इसने भी ये गहन विषय को बहुत सही ढंग से प्रस्तुत किया और समझाया। सबका आभार और अभिनंदन। धन्यवाद उदय कुमार जी। चंद्रकांत शिंदे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाद में हर्षवर्धन जी और अबान जी दोनों हैं, सुषमा जी तो है ही। I must congratulate DEEPA PADI, wonderful exposition. She compared teachings of Bhagwad Gita and also the teachings of Theosophy. Really wonderful thing she has presented, and everything she presented very scholarly, very interesting, very inspiring. Really, Deepa ji, I must congratulate you for this wonderful work on mental plane you did in the home as well as now it expressed to all of us. So very inspiring talk we heard. Really, I am inspired because Bhagavan Sri Krishna in Bhagwad Gita says, as you mentioned, I am seated in the heart of all beings. And in Theosophy also, HPB emphasizes the synchronization of the mind and heart. Yeah. So we are also asked to meditate in the heart and synchronize mind and heart. You also mentioned Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. It is really necessary because there are both sampattis, Asuri Sampatti and Daivi Sampatti, as you mentioned. We have to balance these things, and otherwise mind gets distracted, restless. So when we balance, we are already having all these Asuri Sampattis with us. And some of the things are really limited to our personality. And you compared personality with Arjuna and the soul with the Krishna. Really, it gives some inspiration to think over. And you also mentioned the 3 steps: study, meditation, and selfless service. The same thing is mentioned in Upanishad, which is the Bhagavad Gita teaching, tapaswadhyaya ishwara pranidhanani. So all these, they teach the religion of responsibility. And you also mentioned we are really duty awareness, but not awareness of responsibility. Really, I must thank you for giving this beautiful discourse in this. And also I thank Archana ji and Varsha ji, giving them in a nice and explanation manner. Taral ji, thank you very much for giving me this opportunity, because it is a great privilege to listen and be with online, connected with our international Vice President, Deepa PADI ji. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Yes, Harshvardhan ji, after you, Aban ji. I have a question. First of Who is that? Gautam ji, please, can you start your video or you can ask? Yeah.
First of all, I want to say about the Mahatma Gandhi's connection. In autobiography itself written, when Mahatma Gandhi were thrown out from the train, जब उनको अस्पृश्यता के कारण उनको धकेल के निकाल दिया गया था ट्रेन से, वहाँ पे he had realized that Blavatsky's there is no religion higher than truth. वहाँ पे लिखा है autobiography में. So he was connected with that. But one thing I want to ask, जो संस्कृत है, संस्कृत is a Vedic and Daivik language. It's a world language of the creation. But English is a partial fulfillment of the translation of the Sanskrit. No English literature has fully, transformed the entire translation of the Sanskrit. Not even other languages also. So I feel Theosophy is a partial fulfillment of the knowledge even of the Vedic consciousness, the Vaishnava Tattva. So how Theosophy justify this Vaishnava Tattva or the Brahmanic identity? I hope you understood my question. Actually, it will take a lot of time to discuss. We have to go to the very beginning. And I think we don't have that much of time also. But as we have seen in Secret Doctrine and the other writings, Blavatsky has mentioned about these tattvas, in a different language, in a different, the expressions are different. But when we understand the thing, and then we read Madame Blavatsky's book, then it becomes easier, to understand actually what she means, isn't it? And particularly Madame Blavatsky, I don't think any other theosophist had understood our Hinduism, Vaishnavism, and our Sanatan Dharma as Blavatsky had understood it. But the problem is, when her language, is different, and it's difficult. If somebody reads it for the first time, he or she won't understand it. But those who have done much research into this, in Hinduism and Sanatan Dharma. Excuse me, I heard you saying that you want to know about the how the. Can you repeat your question? I just got diverted. Yes. Theosophy justifies the meaning of Sanatan Dharma. Justifies the meaning of Sanatan Dharma. Sanatana, the Vaishnavism. Not Vaishnavism, Sanatan Dharma. Of course, I can say that Theosophy, because yes, definitely. Vaishnavism is a very bigger thing. That is different, yes. Sanatan Dharma is not Vaishnavism. It is only limited in India, and exactly. Asurons ka desh ho gaya. Yes, yes. Actually, Sanatan Dharma is much beyond Vaishnavism. And it is, you can say that Theosophy is aligned to Sanatan Dharma. You can say that, because Sanatan Dharma is above all religions. As I said in my talk, it is beyond Buddhism, Jainism, Sikhism, Muslim, all other religions. That speaks of only oneness. Sanatan Dharma speaks of oneness. And this is very much similar to Theosophy, isn't it? Thank you. I hope I could give you the right answer. Yes. Thank you, Deepa ji. Thank you, Gautam ji. Harshvardhan ji, you can continue now, and then Avan ji. Yes, I must first, in the introduction, let me congratulate our Vice President, International Vice President Deepa PADI ji. And really, today's subject that you prefer to deliver the lecture is really very wonderful, and it has been discussed all over the world since quite long time. I think Theosophical Society was founded in 1875, and since then this subject has been discussed so well, and now all over the world this Sanatan Dharma, the definition of Sanatan Dharma is very clear. Yes. And it has got the total humanitarian approach.
Therefore, I must add whatever you just delineated with the subject, that is the Bhagwad Gita and Madam Blavatsky. This, I think, one is the character and the other is the universal truth. And how the character behaves with the universal truth is really the wonderful approach. Once Madam Blavatsky was asked by one of the disciples, Madam, what is required to acquire knowledge? She said, understanding. Then again, another person asked, still not I am satisfied with the answer. Please give me another understanding for that. She told, more understanding is required. In this way, as a theosophist, we must continue for our more understanding, for more knowledge, and for, yes, and for delineation and discussions and deliberations with all the people, that we can churn the most important thing in our life. I must congratulate, because time is too much now, I think. Yes. So I must congratulate Varsha also. She speaks very nice in Gujarati. Now for the translation work in Gujarati, we are not worried now. She is there to do it. And Archana ji, your pronunciation in Hindi, excellent. Your Hindi is superb in that way, and you translated so nicely. And really, this TRIVENI program creates a kind of atmosphere. Yeah. This way, it is our chance for us to listen to our Vice President. Then also we have chance to listen to our Shinde ji from Adyar. Then also from other parts of our country. So really, it is a wonderful program, and we cannot miss it in spite of our all shortcomings and our engagements and avocations, everything. So really, I am very thankful. Thank you, Arjuna ji. Yes, that we will continue in this way. Thank you very much. Sure. Time is catching up. Avan ji, quickly, few words. And और कोई बोलना चाहता हो तो बोले. और सुषमा जी, आप तो अंतिम में एक वाक्य कहेंगी. Taral brother, I just want to say two things about service. Service is also very important from all points of view, from all religious point of view, including Zoroastrianism also. Yes. Now, you start with selfishness, then you go to selflessness. From selfish, because usually we humans are a bit selfish, but getting knowledge after reading, after studying, after hearing all these people like you, we go from selfishness to selflessness. Truly, and we go further, we become selfless. We do service not because our self is doing, but because it is being done through the proper channel wherever we have been going to. From selfish to selflessness, selfless is the real service given to one in any form. That is what I just wanted to say. Thank you. Very true. Absolutely right. All the three people, Varsha to છે ગુજરાતીમાં પાવરથી, અને Archana, you are excellent in your oratory also and your Hindi. And so thank you very much, Taral ji. Maru, I will not speak in Gujarati, maybe madam may not understand. My knowledge about Gita has increased many folds by attending to these talks, as well as by reading Madam Annie Besant, Dr. Annie Besant. Her Gita, small Gita, I have been reading regularly, and so that gives me lots of knowledge about Gita. Thank you very much. Thank you, once Avanji. again, जो अमृत और सत्य के लिए जो हमेशा विवाद रहा है, इसी में भारत की सीमितता के ऊपर जब अंकुश लगाया गया तो भारत की नारियों का हरण किया गया और भारत के सुंदर पुरुषों के प्रति भी आकर्षित रहा गया विदेशों का. तो ये हमेशा यही रहा है कि सत्य और अमृत के लिए हमेशा लोग झगड़ते रहे, देवता और दानव. So there is always a competition between bad and good. जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद. सरल जी नमस्कार. हाँ सुषमा जी, मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ वाइस प्रेसिडेंट पादी जी का, अर्चना जी का और वर्षा जी का. एक बात मैं कहना चाहती हूँ
कि अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि गांधी जी ने गीता कहाँ पढ़ी और मैडम ने जवाब भी दिया। वास्तव में गीता का अनुवाद जो है वो 1749 से लेकर 1836 जो चार्ल्स विल्किंसन थे उन्होंने किया था और उनके द्वारा ट्रांसलेटेड गीता गांधी जी ने पढ़ी। और दूसरा जो प्रश्न पूछा था कि वैष्णविज्म और सनातन धर्म की बात की है, तो वैष्णविज्म तो एक सेक्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट विजडम। हमारा जो सनातन ज्ञान है वो सभी धर्मों का सार है, तो वो एंशिएंट विजडम और वैष्णविज्म में बहुत अंतर है। वो सेक्ट है, एक संप्रदाय है, एक पर्टिकुलर सेक्ट की बात कर रहे थे, तो ये दो अंतर है। और तीसरी बात गांधी जी ने कहा था गीता जो है वो वर्ल्ड मदर है, जो भी उसका द्वार खटखटाएगा वो उसको शरण दे। और जिंदगी भर गांधी जी ने भगवद गीता अपने पास रखी। तो यही बातें कहनी थी। और सर्विस के संबंध में बहुत बातें हुई। गांधी जी भी कहते थे the service we render to others is really the rent we pay for our room on this earth. तो हम किसी के लिए एहसान नहीं कर रहे। The service we render to others is really the rent we pay for our room on this earth. तो बस इसी ख्याल को अपने जहन में रखकर छोटी छोटी चीजों की सर्विस करें तो हम शायद वो के अधिकारी बन जाएंगे, हम पात्रता ग्रहण कर लेंगे। मुक्ति के मार्ग पे चलने की वो पात्रता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे बोलने। वाह वाह सुषमा जी, आपकी बात से एक वाक्य और मेरे मन में आता है कि आपने घर भले अपने बना लिए और किराया नहीं देते हो, लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि इसे अपना बनाने के बाद भी आपको सेवा की और सारे जो गुण हमने आज सुने उसकी उस रूप में हमें किराया निरंतर देते रहना पड़ेगा और लोगों को भी प्रेरणा देती रहनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, अतुल भाई समापन की ओर चलें। मेरा बस एक कहना है कि ब्राह्मणों को जी। ब्राह्मणों को सिर्फ एक जाति की तरह ना देख एक आइडेंटिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि एक उच्च जाति में पैदा होना भी किस्मत की बात होती है। जी गौतम जी, आपकी बात हम लोगों ने सुनी और उसे ग्रहण की, और समय इतना हो चुका है कि 8:30 बजने वाले हैं, तो मैं अतुल जी आपसे निवेदन करूंगा कि समापन की ओर चलिए। કેશવબેન હવે આપણને શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું। કેશવબેન આપનું સ્વાગત છે। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम Very nice, ma'am. Thank you. सर आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, वर्षा जी और अर्चना जी और सभी आमंत्रित लोगों को। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, अगले मंगलवार को ही मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ मिलने वाले हैं। और इस बार हमसे भारत की हृदयस्थली जुड़ने वाली है, तो आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल क्यों गई? सोनल 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 बाय बाय जल्दी करो, જતી રહી રડે ને જતી રહી। ओ बाप रे, શું થયું બચ્ચા? મમ્મી ફટકાવી। अच्छा वीडियो कॉल लगाइए उनको। बाय 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 बाय। Keshwar, you are going to Varanasi?